Fine. So as we discussed earlier that we are going to take up, the paper which are asked now as well. Yeah, Vivek, I'll start that. Uh, so there are papers which has been changed, especially people are having this apprehension that, sir, when it comes to the CAT papers, we are able to solve the question because quite a good number of questions have been also taken in the classroom. But the challenges comes whenever you are writing a mock. Okay. And I think some of the best mocks that we have prepared is CDC 3. So I thought of taking this particular paper in today's session. I've already shared PDF with all of you. I request all of you to take up it in 40 minutes because the time duration for that is 40 minutes only. In 40 minutes, you need to answer as many questions as possible. Take it as a test that you are sitting in an examination hall and your purpose is not to solve the toughest question, but to get the highest possible score. And after that, we can have a discussion. Some of you may have taken it earlier as well. Then also it is fine. I would say, please go through this paper. Really a beautiful, one of the best sets that we have formed. Exactly on the pattern of CAT 2024. Last year it was there where the quite a good number of questions were also asked from data interpretation. So I'm sure all of you have seen, if you have taken any of the CAT paper, you must have seen these type of questions. But yes, as the requirement was more of, the paper discussion, which is based on mock. So I thought of taking this one. Fine. So it is already shared. I request all of you to go through it, try to score as high as possible. And then we can have an analysis after it. Fine. You can start with the paper now. Thank you. Vivek, I'll start recording once we'll have an analysis session. Sir, your screen sharing is on, sir. Please disable it. कह रहे हो अभिषेक? सर मैं ये कह रहा था आपका स्क्रीन शेयरिंग ऑन था, वो आप कुछ वर्क कर रहे थे ना, तो मैं इसलिए कह रहा था कि यू शुड डिसेबल इट. ये स्क्रीन विजिबल नहीं है? नाउ इज इट इज विजिबल, सर. अच्छा.
4 minutes left only. Fast. Okay, stop writing. How was the paper? How was it? Good, easy, moderate. Online, Abhishek Jain, Ajay Dubey, Aman Singh, Ujjwal. Any feedback about the paper? Jai Bhari, अगर आप moderate है तो Decent, sir, decent. शिवांश गौर, good. Good means moderate, tough, easy. Easy to mod. Okay, very nice. Okay. Vivek, how was the paper? There. ठीक था. So everyone is saying it is easy to moderate. ठीक है. There are questions which are doable. Okay, very good. Ujjwal says, अच्छा है. Ajay says also that it is a moderate paper. Here we go. I request all of you now to pay attention what we are going to do here. Okay, very good, Vivek. Good to hear that. But this is exactly what was the paper of CAT 2024. And I'm sure if you look at the cutoff for all the years comparing to CAT 2023, CAT 2024 was easier. That is the reason why the cutoff went up. Okay. So let's start now. A regional retail company conducted a top seller bonus program over 9 months from January to September. So this is not a 1 year period. First thing that you need to understand is examiner ne diya hai aapko that it is the 9 months of the top seller bonus program. After the first 6 months, the company realized the leaderboard
release the leaderboard for its 12 salesperson. So I know S1, S2, S3, 4, there are 12 salesperson and leaderboard, मतलब किसका कितना कितना score है, what are the points that each one has gained. Each month, the top 8 performer were awarded the bonus points. How many people are there? How many total people are there? 12. So the points are given to what? 8 only, which contribute to both individual and team totals at the end of the program. ठीक है, तो एंड ऑफ द प्रोग्राम के बाद उनका जो टीम का स्कोर होगा दैट विल बी द सम ऑफ द स्कोर ऑफ किसका? इंडिविजुअल. एक तो इंडिविजुअल स्कोर है, दूसरा टीम का टोटल इज द सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ द टीम मेंबर. आगे चलते हैं. द सेल्स पर्सन with the highest individual overall points receive the annual sales award. So a single man will be going to get us annual sales award if he or she has got the maximum points. A team with the highest combined overall points, that is manager plus associate, was declared the champion team. Team वो champion मानी जाएगी जिसके दोनों लोगों का sum of the score will be highest. ठीक है, that will be the champion team. So they are already named as a manager and associate. So this comes to my mind that there must be a manager and another is associate. तो लगा कि क्या पता manager और associate भी निकालना पड़ेगा. But as you move forward, you will find that is only not required. Only manager and associate is given for this. The monthly bonus points were awarded based on the rank determined the sales achieved. First ranker, you will be giving 10 points. Second, 8, third, 6, fourth, 5th. ठीक है, 5th, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1 point. तो initially it is 10, 8, 6, but उसके बाद फिर consecutive natural number है, फिर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, and 1 है. A salesperson, ठीक है, तो actually it is not a point number 9 and 7 are not awarded here. 9 and 7 दो नंबर नहीं दिए हुए क्योंकि 8 people are awarded a point, so you are not awarding 9 and 7. You are given all the points from 1 to 10 except 7 and 9. ठीक है. A salesperson who scored numerically smaller rank, ठीक है, then the other is called a better performer. तो अगर मेरा रैंक कम है, मतलब आई एम रैंक 1, सो आई एम अ बेटर परफॉर्मर देन रैंक 2. रैंक 2 इज अ बेटर परफॉर्मर देन रैंक 3. इस समझाने के लिए दिया है. तो इसका मतलब ये मत समझना कि रैंक 1 हैज स्कोर्ड द लीस्ट मार्क्स. नो, रैंक 1 इज द टॉपर वन. ठीक है. Okay. Then for example, third rank is better than fourth rank. The bar graph given below shows the team composition and the points earned by each salesperson after 6 months. So this figure is given after 6 months. मतलब हमारे पास कितने और मैंने डिसाइड करने के लिए who is the leader? 3 more months are there. It is not a 1 year period. It is a 9 months period. Very nice. So far, who is the leader here? Salesperson 1. And who is doing the worst? 11. Very good. Let's come to the question. If S1 finish among the top 3 performer in each of the first 6 months, what is the minimum number of months in which S1 must have top salesperson, must have been the top salesperson? तो मैंने कहा 6 महीने तो टॉप 3 में रहा था, मतलब in all first 6 months he was among the top 3. ठीक है. तो what is the minimum number of months? He must have top salesman. टॉप सेल्समैन के लिए आपको 10 का स्कोर चाहिए. मेरा बस चले तो उसे हमेशा ही टॉप सेल्समैन रखूं, तो 10 into 6 is 60. आपने कहा क्या बात कर रहे हो सर? 60 हो गया तो what happened is I want a point of 54. You are getting 6 points more. तो मैं चाहूंगा कि 6 point ही घटा देता. मैं तो कहता हूँ 4 point दे दो इसमें. But the moment when you are giving 4 point, it is not acceptable because he must score these points. तो मैं कहता हूँ उसको 6 points दे दो. कितने points दे दो उसको? 6 points दे दो. किसी दिन काट के 10 की जगह 6 points दे दीजिए. कितना ड्रॉप हुआ? कितना ड्रॉप हुआ? 4. अभी भी काम नहीं चला, आपको 2 और ड्रॉप करना पड़ेगा. तो one day you must drop 10 point to 8 points. So there are 2 months when he is not getting 10 का score. 10 score he is not getting for 2 months. So can I say for 4 months he was the topper? Can I say that? Yes, no. Reason is he is among the top 3 in all the 6 months. So it is not possible that you give him 4 points. 4 points तो नहीं हो सकते ना. Top 3 are 10, 8 and 6. So I would say the points that is given 6 point घटाने थे, एक में 4 लेस कर दीजिए, एक में 2 लेस कर दीजिएगा. Very good, Devika, Vedika, thank you so much. So my answer comes out to be for 4 months he was the topper. बिल्कुल. तो 4 months हो गया. अब आपने कहा सर ये तो मिनिमम था, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, इसके 6 points लेस है तो हर दिन 2-2 point कम कर दो. Don't make him topper, just give him 8 points. So can I say it is going to reduce by 2 points one day? It is coming out to be 3 months in that case. आपने कहा सर मैक्सिमम चाहिए होता
तो 4 months होता, maximum is 4 months. But when it comes to the minimum one, you should reduce it by minimum points. So 10 की जगह you are going to give 8 months. So minimum it is coming out to be 3 months and maximum में कितना आ रहा है बताओ? Maximum it comes out to be 4 months. So my dear, the answer is not 4, the answer is 3. Vedika, is it clear now? Sir, I have a Thank you so much. ठीक है. Is it fine? Maximum cannot be all 6 months. I hope it is clear to all of you. So it is for the 4 months you can be topper. ठीक है. You are getting a score of 10 each. But when it comes to the minimum, I don't want the score to be 10. तो मुझे 10 को कम करना तो मैं 8. I will reduce it by minimum value. So to reduce it by 6, I will be just reducing 2 for 3 months. That comes out to be minimum 3 months. He will be getting a score of 10. Very good. Maximum 5 months नहीं हो सकता because you need to be among the top 3. So if you are going to give someone a 4 points, it is not possible. Let's come to the next question. maximum 5 क्यों नहीं हो सकते हैं? मैक्सिमम 5 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आप टॉप 3 में रहना चाहते हैं सर. आपके जो पॉइंट्स आएंगे वो 10, 8 एंड 6 होंगे. तो कभी भी आप 6 से कम पॉइंट नहीं ले सकते. अगर आप ऑल 6 में यू आर गिविंग 10 पॉइंट्स, सो योर पॉइंट्स विल कम आउट टू बी 60 पॉइंट्स. लेकिन आपके पॉइंट्स जो आ रहे हैं 6 मंथ्स के वो 54 है. तो इट इज रिड्यूसिंग बाय 6. तो सर अगर आप एक ही में 6 कम कर देंगे तो उसका पॉइंट 10 - 6 इज कमिंग आउट टू बी 4 पॉइंट्स. दिस पर्सन विल नॉट बी अमंग द टॉप 3 क्योंकि क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन है S1 finish among the top 3 perform in each of the first 6 months. Is it fine? Yes, sir, fine. Correct. ठीक है, बहुत बढ़िया. Thank you. Okay. So S1. Here we go. S1 finished among the top 3 performer in 7 months, but did not earn any point in the last 2 months. मतलब 9 months में से 6 months में S1 has got 54 points. इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे. 7th month में he will be getting a score of 6, 8 or 10. ठीक है. And 8th and 9th month में there is 0 points. S7 is 39. 6 months में he is at 39. Okay. He is getting the annual sales award. By the way, what could be the point of S1? S1 के total points कितने हो सकते हैं? Can be 60, 62 and 64. ध्यान से सुनिएगा. What is the lowest monthly rank S7 could have achieved in the remaining 3 months? Lowest rank मतलब what is the minimum points that he can get it? One thing is for sure, ठीक है, lowest point के लिए मैं ये चाहता हूं कि इसके भी कम से कम point रहे तो मैं 60 लेता हूं. If you take 64, his points will go up. मैं बड़े आदमी को हराना चाहता हूं, मुझे ज्यादा पॉइंट चाहिए होंगे. मैंने कहा कम से कम पॉइंट कितने हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसके मिनिमम रखो ना, इसके 60 रखो. He will be getting 6 points here. Is that fine? तो S7 6 months में yes जय भारिया. सर ये 8th and 9th मंथ में 0 पॉइंट्स कैसे हो गए? मतलब वो वहां पे पास्ट लिखा था ना, लास्ट 2 मंथ्स. और Last, that is for the regional retail company conducted a top seller bonus for the next 9 months, that is January to September. So 6 months to January to June is already given. Then it is kya? July, August and September, 3 months. So last 2 months is August and September. Is it fine? ओके सर. मेरे को लगा कि वो ऐसे है कि वो 7th मंथ से पहले वाले लास्ट 2 मंथ. नहीं नहीं नहीं, ठीक है. S1 finish among the top 3 performer in 7 months. Last 2 months मतलब आखिरी के 2 पॉइंट में कुछ नहीं कर रहा. तो यार वो पहले तो नहीं हो सकते. Last 2 months means the duration is taken for the 9 months. So last 8th and 9th month में he is getting a score of 0. ठीक है. Due to unavoidable circumstances, S7 overtook S1. S7 ने S1 को overtook कर लिया भाई. ठीक है. अभी तक 39 पॉइंट्स लेके आया है तो उसको 61 पॉइंट्स चाहिए. ठीक है. क्यों चाहिए 61? What is the lowest monthly rank S7 could have achieved in the remaining 3 months?
मैंने कहा अगर किसी में मुझे लोएस्ट रैंक चाहिए तो बाकियों में तो टॉप करूंगा भैया, आई विल स्कोर 10 10 10। सो what is the score here? 39 plus 10 is 49 plus 10 is how much? 59 is the 59 points का स्कोर आ गया। आपने कहा सर 60 में कुछ काम नहीं चलेगा, इफ यू वांट टू बी टॉपर यू नीड टू स्कोर 2 points देयर। तो द 1 month में you need to score how many points so that it comes out to be 61 points? I will say 2 points। अच्छा, जो 8th रैंकर है जो बॉटम में है उसके 1 पॉइंट आते हैं फर्स्ट 6 months। S7 ने पहले 6 महीने में एक ऐसा था exactly one था जिसमें इसको 0 पॉइंट मिले। Then which of the following cannot represent the number of points scored by S7 in any of the other 5 months? तो क्या पॉइंट नहीं हो सकते? S7 के पॉइंट्स कितने? 39 पॉइंट्स आते हैं। ये उसने 5 में करे हैं, एवरेज 8 के आसपास आ रहा है। एवरेज किसके आसपास आ रहा है? 8 के। 5 मंथ इसलिए क्योंकि 1 मंथ में कुछ नहीं स्कोर किया था। आपने कहा सर ऐसा करो 5 into 10 कर लो, ठीक है। आपने कहा सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 50 हो गया। मैं कहा 5 into 8 कर लो, ये कितना हो गया? 40। 1 पॉइंट कम करना तो 7 होना चाहिए, तो 7 स्कोर कर सकता है। आपने कहा सर एक काम करो, ये 7 आया है आपका, ध्यान से सुनिएगा, इसके 2 बढ़ाओगे तो उसके 2 कम होंगे, 5 हो सकता है। इसके 2 बढ़ाओगे तो उसके 2 और कम होंगे, 3 हो सकता है। इसके 2 बढ़ाओगे इसके भी 2 कम हो सकते हैं, 1 हो सकता है। तो दिस कैन बी 1 3 and 5। अब इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमने कहा यार एक काम करो ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप 4 में 8 पॉइंट्स दे दो। 4 8 कितना हो गया? 32, ठीक है। एक में आपका 0 पॉइंट था, ठीक है। मुझे 39 चाहिए, तो मुझे कितने पॉइंट चाहिए होंगे? 7 पॉइंट चाहिए होंगे। आई विल बी गेटिंग 7 पॉइंट्स। आपने कहा सर अगर मैं 7 पॉइंट्स मुझे चाहिए होंगे विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे पढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये कितना रिड्यूस करेगा? बोलो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मैंने कहा एक काम करो, आई एम गेटिंग 8 पॉइंट्स इन 4। 8 4 का कितना हो गया? 32। एक में मेरा 0 है, ठीक है, एंड सॉरी 6 पॉइंट। व्हाट इज 6 4 का कितना हो गया? 24। आपने कहा सर 39 पॉइंट चाहिए थे, ये क्या कर दिया? 4 में आपने 24 पॉइंट्स आ गए, मुझे 39 पॉइंट चाहिए। आई वांट टू इंक्रीज बाई कितने से? 15 से। क्या 15 से ये इंक्रीज हो सकता है? चेक कर लेते हैं, रुको चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि ये 24 है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एंड इफ यू इंक्रीज इट बाय इट विल बी ओनली इंक्रीजिंग बाय 2 एंड इट डिक्रीजेस बाय 2। तो आपने कहा सर ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा ही ऑड नंबर आएगा, आपके 2 and 4 में से कोई भी रूल्ड आउट नहीं हो सकता। तो मैंने 6 3 18 कर लिया पॉइंट। कितना कर लिया इसका पॉइंट? 18। 6 3 18 पॉइंट्स आर कमिंग देयर। 18 पॉइंट्स अगर किसी में आ रहा है तो आपके पॉइंट्स कितने बचे हैं? 39 में से अगर 18 जाएगा तो कितना बचा है? हाउ मेनी पॉइंट्स आर लेफ्ट है? ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 21 पॉइंट्स आर। तो 2 में 21 पॉइंट्स आर, ठीक है। अगर आप इनको बढ़ाओगे, इफ यू इंक्रीज देम, तो क्या होगा? आई विल टेक वन ऑफ द पॉइंट टू बी 5। मैंने ये वाला पॉइंट एक 5 ले लिया, तो कितना बचा? अगर आप 21 माइनस 5 हो गया तो कितना आ गया? क्योंकि मुझे इवन नंबर चाहिए होता है, तो मैंने कहा सबसे बड़ा ऑड नंबर जो आ रहा है यहाँ पर 5 आ रहा है, दिस कम्स आउट टू बी कितना? 16। आपने कहा सर 16 तो नहीं आ सकता, तो मैं कहूंगा अगर 4 बढ़ाऊंगा 4 3 12 हो जाएगा। कैन आई से, सुनिएगा, 6 को मैं 4 इंक्रीज कर देता हूं, तो 4 3 कितना इंक्रीज हुआ ये बताओ? अगर ये 12 इंक्रीज हुआ तो इसको कितना डिक्रीज होना पड़ेगा? क्या पॉइंट्स आ जाएंगे आपके? तो 4 आ सकता है मेरा, लेकिन 2 नहीं आ सकता। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, लिसन टू मी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। आई एम सेइंग वो बाकी सारे क्लियर हो गए आपको, 1 and 3 तो हो गया क्योंकि यू नो ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आर ऑलरेडी गिवन, इट इज गिवन एज अ कितना देखो 39 पॉइंट्स आर गिवन। तो मैंने क्या कहा, एक में तो 0 का स्कोर है, एंड आई विल बी गोइंग टू गेट अ स्कोर ऑफ कितना? 10 4 4। 10 4 का कितना हो गया? 40। आपने कहा सर ज्यादा हो गया,
तो मैंने वहां से कर लिया, मैंने कहा एक काम करो 10 थ्रीजा कितना कर दो, 30 कर दो, मुझे कितने पॉइंट्स और चाहिए, 9 चाहिए। मैंने कहा एक काम करो 10 थ्रीजा 30 हो गया, मेरे 2 मैचेस बचे हैं, ठीक है, कैन आई गेट एक में 5 और एक में 4? ऐसे भी कर सकते हैं, 10 थ्रीजा 30, आई वांट अ 9 मोर स्कोर, तो कैन आई से आई कैन गेट अ स्कोर ऑफ 5 and 4 इन द अदर मैचेस, which is certainly going to give you क्या, 9? I believe it is clear. Yes? किसी को कोई डाउट? Anyone, any question? ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे 7+2 क्यों नहीं लिया, ये भी तो 9 होता है। भाई नहीं, 7 and 9 नहीं तो मैं ले लेता इसको भी। तो आई वुड से 2 is the only one which is not possible here. I believe it is clear now to everyone. ठीक है ना, पक्का 7 is not possible, 9 is not possible. That's why I'm saying 5+4 is 9 is a possibility. ऐसे भी कर सकते थे। Let's come to the next one. Which of the following statement cannot be true? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, S3 was the top salesman in the final month. ठीक है, team 3 becomes the champion. S3 was the top salesperson in the final month. S3 जो था top salesman अगर बन जाएगा final month में, and team 3 become a champion team. मैंने कहा चेक कर लेते हैं। टीम 3 अभी 30 पे है, ये कितनों के बाद है, 6 months के बाद। ये कितना है, 93। अगर ये अगले 3 महीने में 10 और 8 पॉइंट्स भी मारे तो 18 3 54 होता है। 54 पॉइंट्स आने के बाद भी ये 84 तक रहेगा, इट कैन नॉट बी चैंपियन। डू यू एग्री विद टू दिस पॉइंट? आपने कहा सर बकवास है, तो सपने देख रहा है, S3 is not possible, even if it is a topper then also the team 3 will not be the top team। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपने? कहा सर यही गलत, S3 third team cannot be the champion team, even S3 was the topper in all of them, then also it cannot be the champion. My answer comes out to be option 1. I believe it is clear. How do you rate it? Easy, very easy. Okay, I say all of you can do it. As I said, slot 2 के पेपर के ऊपर बेस था ये पूरा, तो ठीक है, क्या 24 का? ओके, 26 का क्या आंसर है? 26 का आंसर क्या मैंने छोड़ दिया क्या कोई क्वेश्चन? 7th है याद है, 2 पॉइंट्स आ रहे थे उसके, तो दैट वुड बी 7। उज्जवल, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है।
Sorry, internet is creating some trouble here as well. So, coming to the questions. There are people who are saying CAT के questions answer आ गए, पेपर पहले सॉल्व किया था, कोई बात नहीं, फिर भी आप इधर देखिएगा, ठीक है. तो there is a company name XYZ Limited. We track it for 4 consecutive weeks, Monday to Friday, represented through a candlestick chart. In the candlestick, the body represents the open to close price. मतलब मंडे को सुबह 325 रुपए में खुला था, 330 में it was ended on Friday. ठीक है. And the wicks at the end of the body represent the highest. ये wicks है. This is the highest price closing. ठीक है. This is highest and lowest closing price. जिस दिन क्लोज हुआ तो आपको कितने क्लोजिंग प्राइस मिल गए? एक हाईएस्ट मिल गया, एक लोएस्ट मिल गया और एक फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस मिल गया. 3 क्लोजिंग प्राइस आपको मिल गए. मैम ये मंडे को ओपन हुआ था, फ्राइडे को ये क्लोज था. इस वीक में हाईएस्ट क्लोजिंग ये था और लोएस्ट क्लोजिंग ये था. तो इसका मतलब यू नो द क्लोजिंग ऑफ फ्राइडे, you know the closing of highest closing in a day, you know the lowest closing of a day. There are 2 more closing that usually you need to find out. Is it fine online as well? क्या ये समझ में आया? ये ग्राफ देख के थोड़ा सा आपको डर जरूर लगा होगा. I can understand that. The body says that it is the closing, opening and the closing price. Monday morning this is the opening price. Friday this is the closing price. This is the highest closing price. Highest price नहीं है, क्या पता पहुंचा तो कहीं भी होगा, लेकिन जिस दिन क्लोज हुआ हाईएस्ट प्राइस इज दिस एंड दिस इज द लीस्ट क्लोजिंग प्राइस. ठीक है. Wicks at the end of the body represent highest and the lowest closing price of the share on any day in a particular week. The opening price refer to the price on Monday morning, जैसे मैंने आपको बताया, while the closing price refer to the price at the end of month. अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है this is opening price of the week अगर रेड में, और this is close price मतलब ग्रीन हो गया, मतलब शेयर हैज गॉन अप. बट मान लो यहां पर जो ओपन करा है वो कौन से दिन ओपन, क्या ओपन करा है? 330 पे क्लोज हुआ था तो 330 पे ओपन होगा, हाँ ना? ठीक है. और बिका कितने का? व्हाट इज द एंड, मतलब एंड ऑफ द डे प्राइस, व्हाट इज द क्लोजिंग प्राइस? 318. एंड देन इट ओपनड एट व्हाट? नेक्स्ट डे 318. इट क्लोज एट व्हाट? 325. देन इट ओपन एट 325. इट क्लोज एट व्हाट? 335. आई बिलीव इट इज क्लियर. प्लीज आस्क इफ देयर इज एनी क्वेश्चन. ऐसे ही स्टॉक का चार्ट बनाया जाता है. हाँ, 318 is the closing price of Friday. This body represents opening and closing price. ठीक है. Okay. Sir, I have a Red question. candle. Yes, someone is asking. Yes. Sir, I was asking कि this is the general form only. तो LRDI सेट्स में कभी ऐसा भी होता है that the general form नहीं होता, उन्हें रिवर्स करके ऐसा देते हैं, या फिर जनरली जो यूज होते हैं पैटर्न्स वही क्वेश्चन वही है? नहीं, सही बताऊं उससे पहले तो कई सारे लोगों ने तो पढ़ाया भी नहीं था ये ग्राफ. But what happens is you need to see the graph. Like, everything is mentioned here. Are you getting yes it? sir. No sir, like this graph is like जैसे जनरली होता है. This is correct, like general trading में जो होता है. But I'm asking कि you are saying can it be reversed as well? Yes, in the question can it be reversed or generally आते हैं कि it can be reversed. It can be reversed. ठीक है. Not necessary that it is given in the green color. I can change also their colors. But then everything needs to be written there and you need to understand it from that writing. ठीक है. Usually ऐसा करते नहीं है, ऐसा बदमाल करते नहीं है. They try to find out कि are you aware about these things, economic times वगैरह थोड़ा बहुत आपको बार ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन है, and that's why the coaching has been joined. ठीक है. Okay. Can we continue now? ठीक है, आगे चलते हैं. मेरे ख्याल से अभिषेक can't hear me. A red candle indicate the opening price was higher and the closing price of the week higher than the closing price of the week. A green candle indicate the closing price was higher than the opening price of the week. Mention करा हुआ है. उल्टा लिखा होता मैं वो मान लेता. Whatever is written there, that is supposed to be correct. All the buy sell transaction are executed only at the daily closing price. आप खरीदेंगे, ठीक है, you buy or you sell at the closing price. तो जो closing price होगा उस पे आप खरीदेंगे या उस पे बेचेंगे. बीच में आप कहीं खरीद और बेच नहीं सकते. I believe it is clear. ठीक है.
then week's lowest price, closing price of the week, opening price of the week, week highest score, ठीक है, week highest closing price in any day. Green में नीचे वाला opening है, ऊपर वाला closing है. Red में नीचे वाला closing है, ऊपर वाला opening है. मतलब आपने open top में किया लेकिन it goes down, so there's a loss. I believe it is clear to all of you now. I can move ahead. In case of any question, you can ask. What is the maximum possible 5-day closing price average for week 2? Okay. What is the maximum possible 5-day closing price average for week 2 if it is an integer? ठीक है, तो 5 दिन का maximum possible 5-day closing average क्या था? Average, ठीक है, if it is an integer. हमने कहा यार कौन से week 2 का बता रहे हैं ना? week 2 का Friday का price is already known, it is 380. एक maximum price is already given as a 334. Minimum price that where it closes also 318. ठीक है, is it fine? तो हमने कहा 318 is the minimum and maybe Friday is the minimum value where it closes. I believe it is clear. ठीक है, तो minimum is Friday itself. अब आपने कहा है highest average, maximum possible 5-day closing average if it is an integer. हमने कहा ठीक है यार मैक्सिमम पॉसिबल कर लेते हैं. हम मानते हैं कि मार्केट ऊपर ही था, एक दिन बस धड़ाम से ही गिर गया. ठीक है, तो हाईएस्ट प्राइस इज 334. आई कंसीडर इट टू बी 334 एंड इन ऑल डेज इट वाज 334. ठीक है ना, आई कंसीडर वन डे इट वाज 334. ठीक है, मिनिमम वाज 318. आई विल कंसीडर ऑल ऑफ दीज स्कोर्स टू बी 334 334. अच्छा, कहीं ये देख लेना कि ये लिखा है कि ये डिफरेंट स्कोर होना चाहिए, नहीं लिखा, तो आई विल से हर दिन ही 334 334 334 था. मैं बोलो भाई, ठीक है, ठीक है, नो सर, ओपनिंग प्राइस इज नॉट इफ टुडे इट इज ओपन. आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वो कह रहा है 5 डे का क्लोजिंग प्राइस क्या था. So if it is opening, I'm not interested. Maybe it opened at a very low price and it went up highest on the day one itself. Is it fine? Sir, but I thought that we will take the opening price of the week. मतलब वो एक value तो आएगी. Rest other days we'll take it as 334. बिल्कुल भी नहीं आएगा. I tell you why it is not going to come. Opening price is the price at which you open on Monday. But the price that is asked to you is 5-day closing price. Are you sure that it will not be increasing on Monday? सर बट 330 तो क्लोजिंग होगा ना, फ्राइडे का क्लोजिंग तो 330 ही होगा ना. हाँ, फ्राइडे का क्लोजिंग इज 330, वो तो हमने ले लिया ना. अच्छा सॉरी, दैट इज द क्लोजिंग इज 300, फ्राइडे का 318. 330 नहीं होगा भाई, ये कम है, ये 318. इज इट फाइन? दिस इज ओपनिंग प्राइस माय डियर, यू कांट टेक दिस. दिस इज द प्राइस मंडे मॉर्निंग का प्राइस. ओके सर, ठीक है, तो आई वुड से द हाईएस्ट प्राइस इज 334. आई कंसीडर ऑल डेज इट वाज क्लोजिंग हाईएस्ट. धड़ाम से ये फ्राइडे को जाके गिरा. इज इट फाइन नाउ? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, डिस्टिंग Yes, नहीं sir. लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा. ओपनिंग प्राइस इट इज नॉट रिटन. बेशक से एक बार, हाँ जी बताइए. ठीक है, आपने कहा सर सब में 334 होता तो 334 आता. हाउ मच इज इट लेस? दिस इज 16 लेस. minus 16 upon 5. I will say it is 3.2. So 334 minus 3.2 comes out to be 330.8. It needs to be an integer. So what is the value that is going to come? 330. It can't be 330.8 से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है. उसमें से highest score that you can take is 330. So my answer, first answer comes out to be 330. Have a look. You are free to ask me the query. Opening price is not the closing price. Here clearly mentioned 5-day closing price. And it is not necessary कि maximum can't go on Monday. You know the maximum market में क्या होता है, price कम था और highest price it goes and then suddenly it fall back. ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें कुछ पूछना चाहे? Any one of you? I'm waiting so that you can ask me the queries. हाँ सर. वीक 2 मतलब मैम 4 हफ्तों का डेटा था. वीक 1 का ये डेटा है, वीक 2 का ये डेटा है. तो मतलब वीक 2 के लिए आप बताओ व्हाट इज द हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस
for these 5 days. Average highest closing price for these 5 days. When I'm asking average highest closing price for these 5 days, I assume that every day the market closed at the highest, except on this, because this is coming out to be the closing price. You already know this is the closing price of the week. So Friday का closing price is the minimum. Highest it went up to 334. Opening price से कोई लेने देना नहीं है. हाँ, नीचे ऐसे करके कोई बार होता तो मैं उसको भी consider कर लेता. But there is no wick which is attached to it. Is it fine? Yes, someone is asking me a query. हाँ जी. आप कुछ कह रही हैं? पूछिए पूछिए पूछिए. Continue with that. मैंने 3 नहीं, मैंने 4 दिन इसको हाईएस्ट 334 रखा. एक दिन तो होना ही होना है कम, मैंने उसको माना. ठीक है, क्योंकि दैट इज द मैक्सिमम. इट इज कमिंग आउट टू बी 330.8. मुझे इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इसलिए 3 माय स्कोर शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस. तो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कैन बी 330. यस, बिल्कुल. यहां से मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, अगर ये लोएस्ट विक भी होती तो क्या करते हैं. तो मेरे पास एक ये पॉइंट आता है, एक ये पॉइंट आता, और बाकी 3 दिन आई विल अज्यूम इट टू बी दिस. वी कांट. That is the closing price for a day. That is the minimum closing price for a day. But because there is no wick fitted with this, so I will consider it to be the, the same. This is the minimum price, that is where it is closed. Is it fine? Sir, since there is no line on the lowest value of week 2, so हम उसे assume करेंगे जहाँ पे कैंडल खत्म हो रहा है 318 पे, वही इसका लोएस्ट है, और लाइन जा रही है जहाँ जहाँ वहाँ लाइन में assume करेंगे. सॉरी, जो लाइन जा रही है इस वाले केस में, यू आर टॉकिंग अबाउट द वीक 2. यस सर, फर्स्ट वीक 2, जैसे वीक 2 का लोएस्ट है, उसमें कोई लाइन नहीं है लोएस्ट में. हाँ, तो दिस इज द लोएस्ट वन. इफ देयर इज नो लाइन, दिस विल बी द लोएस्ट. और जैसे वीक 1 में हाईएस्ट में लाइन जा रही है, तो उसका हाईएस्ट होगा 332 प्लस, और एंड लोएस्ट होगा 323. एंड द क्लोजिंग प्राइस, the closing price on Friday will come out to be 330. So you got 3 values. Here you are going to get 1 value, you will get 2 value, you will not be getting any third value there. Is it fine? Yes, sir. ठीक है जी, आगे चलते हैं. Raghav held shares of XYZ Limited at the end of week 1 to 4. ठीक है, end of weeks 1 to 4, his shareholding stood at 20, 50, 30, 40 respectively. At the beginning of the week 1, he owned 40 shares. Initially 40 shares थे. वीक के एंड में, at the end of week 1 to 4, his shareholding stood at 20, 50, 30, 40 respectively. मतलब end of week 1 he got 20 shares, end of week 2 he got 50 shares, end of week 3 he got 30 shares, end of week 4 he got 40 shares. ठीक है, initially when he started he was having 40 shares. ठीक है, if he made exactly one transaction in each week, that is either buying or selling, एक ट्रांजैक्शन, एक हफ्ते में एक ही ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट ही कुड हैव अर्नड ओवर द 4 वीक्स. मैक्सिमम कितना प्रॉफिट वो अर्न करेगा 4 वीक में. क्या मेरी बात समझ में आई? सो इट इज कमिंग आउट टू बी 20, 50, 30, 40. याद रखिएगा, 20, 50, 30, 40. $40, 50 and 40. These are the number of shares. Initially, he was having 40 shares. I believe this is clear. Let me erase all this. Okay. Okay. At the beginning of week, he owned 40 shares. So week के starting में उसने 40 शेयर खरीदे. ठीक है. If he made exactly one transaction in each week, what is the maximum profit he could have earned over the 4 weeks? कितना प्रॉफिट कमाएगा? अब ध्यान से सुनिएगा. प्रॉफिट तभी तो होगा जब आप सस्ता खरीदोगे और महंगा बेचोगे. ठीक है, जो पीपल हु आर इन फ्रॉम द बिजनेस फैमिली, आई होप दे कैन अंडरस्टैंड. सस्ता खरीदो और महंगा बेचो. ठीक है, हियर वी गो. उसने इस दिन खरीदा, व्हाट वाज द ओपनिंग प्राइस? 325. ठीक है, ये ओन कर रहा था तो 325 भी मानेंगे. अब मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं कहूंगा यार 3, जैसे ही प्राइस ना 332 आ जाए, मान लेते हैं परमात्मा की कृपा हो गई,
और हमने 332 पे शेयर बेच दिया, ठीक है, वन ट्रांजेक्शन यू कैन ओनली डू, ठीक है, इन अ वीक. सो आई विल से व्हाट इज द प्रॉफिट दैट यू आर गोइंग टू डू. तो 325 पे खरीदा, 332 पे बेचा, व्हाट इज द प्रॉफिट दैट यू आर गोइंग टू डू? 7 into 20, ठीक है, 140 का प्रॉफिट हो गया. आई बिलीव इट इज क्लियर, ठीक है, आई बिलीव इट इज क्लियर. तो 325 में खरीदा एंड 333 में 332 में बेचा. तो मैंने कहा यार बचा लिए इसने, 7 रुपए कमा लिया, 7 into 20 शेयर्स ही सोल्ड. आफ्टर 20 ही गॉट 30 शेयर्स. और 30 शेयर्स में क्या करेगा? ही विल बी बाइंग इट एट अ लोअर प्राइस, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 2030 ही इज बाइंग शेयर. तो व्हेन यू आर बाइंग शेयर यू आर गोइंग टू बाय एट लोअर प्राइस, ठीक है. तो यहां तो पैसे बच गए आपके. तो मैं कहूंगा 30 शेयर्स you are buying it at lower price. At what price did you buy it? ठीक है, 380 minus 9450. This is the money that you are going to invest. This is the money that you have won. Is it fine? आगे चलते हैं. And then here you are again going to sell 20 shares. You are going to sell at what price? 20 share you sell it at 330. So that comes out to be 6600. ये पैसा कमाई हुआ. 40 हो गया. I buy 10 shares. I will be buying it at the lowest price. So it is buying मतलब पैसा जेब से गया. और ऐसा भी कर सकते हैं आप यहाँ पर 325. Of course that will be 325. आपने 40 shares खरीदे, क्योंकि finally at the end of the day, ठीक है, तो this is with minus plus 332 you sell it at 20, because at the end of the day आप प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी देखना पड़ेगा. आई बिलीव इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो मेरे पास क्या आया? आई बाय इट एट 325 into 40, ठीक है, तो कितना हो गया? 0. 25 4 100 minus 13, ठीक है. Then I sell it at 332 into 20. इनका सम कर लीजिएगा, ऑल नेगेटिव वैल्यूज टुगेदर, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज टुगेदर, विल गेट द प्रॉफिट और लॉस इन दिस. तो करिएगा, क्या आया? minus 13,000 minus 9,540 minus 3,200, ठीक है, 0 4 7 9 3 12 plus 3 is 15. 25,740. हाँ, how much you got from this? ठीक है, 0 4 12 13,000 this. So minus 25 740 plus C. Do you agree with it? ठीक है. Yes. ये कितना आ गया? 0. This is 0. This is 5. This is 2. This is 1 2 5 0. अब ये क्या चाह रहा है इसका? हाँ, what is the maximum profit he could have earned in the 5 इसमें years? we made one mistake. एक सेकंड जरा. सर हेल्ड 40 शेयर्स है, तो उसने बाय नहीं करे. 40 वाला नहीं आएगा मेरे ख्याल से. minus 325 into 40 नहीं आएगा. This is the money, you know, that you invest. This is just a second. सर उसने स्टार्टिंग में 40 शेयर्स हेल्ड करे हैं, तो 325 into 40 जो माइनस किया है 13,000 वो नहीं होगा आई गेस. तो आंसर 500 आ जाएगा. minus 13,000 अगर आप करोगे तो 500 रुपए का प्रॉफिट आ गया इसका. यस सर, वो हेल्ड कर रखे हैं, इसने बाय नहीं करे. हाँ, so it is not the buying, he is not buying, otherwise this will be answer. क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन एक वीक में कर सकता है. ये चेक कर लीजिए. राघव held a share of this. His share is stood at this one. At the end of the week one, he owned 40 shares. अच्छा ठीक है. He owns it. That 12,000 will go away. If he made exactly one transaction in each week, he could have earned over the 4 week. Earning का मतलब what is the money that he will be carrying in his pocket. So I will say this 13,000 will go away. So from that I will say it is only 500 rupees that is left. Is it fine, clear now? ठीक है. Because 13,000 आपका 12,500 का लॉस आ रहा है. बट अगर आप उसमें से minus 13,000 का लॉस घटा देंगे, तो it is coming out to be 500 rupees you will be keeping with him. I consider because these are not the one which are bought on the same day. तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो पहले वाला केस आ रहा है. It is only the money that you are making when you are going to sell or buy it.
बाय में माइनस रखना है और इसमें प्लस रखना, डोंट टेक दिस 13,000, दैट इज द ओनली वे। ठीक है, क्या पता उसे फ्री में शेयर मिले हो, पिताजी ने शेयर दिए हो। ठीक है, सो द प्रॉफिट कम्स आउट टू बी 500 हियर। आई बिलीव इट इज क्लियर। ठीक है, क्लियर, बिकॉज ही स्टार्टेड विद 40 शेयर्स विद इट। नेक्स्ट आ जाओ। The 5-day average closing price at the end of week 3 is 322. ठीक है, the 5-day average. So I want 5 दिन का average closing price for the end of the week 3 is 322. During this week, Wednesday price was equal to the median. I'm sure all of you know when you arrange them in ascending or descending order, median is the middle value. What is the smallest possible value of Wednesday price? Smallest possible value of Wednesday price क्या होगा week 3 में 322? Week 3, 322 is the average price. Let's come to this one. One price highest is kitna? 330. Closing price on Friday is 325. And what is the lowest price? 315. I will say there are two more prices. I don't know what are they. Let's assume them to be A and B. ठीक है, ये 322 से कितना ज्यादा है? 8 है। ये 325 कितना है? +3. This is -7. Can I say A plus B दोनों combine कितना होगा? Should I say that will be -4 to balance them? ठीक है, तो 322 का डबल कितना होता है? बिकॉज एवरेज 322 से ये 4 लेस होना चाहिए, दैट इज 644 से -4 होना चाहिए, दैट कम्स आउट टू बी 640। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो 320 320 लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो एक 315 आ गया, एक 320 आ गया, एक 320 आ गया, एक 325 आ गया, एक 330 आ गया। कैन आई से दिस इज मीडियन? अब आपने क्या करा, इसको कम करा तो ये बढ़ जाएगा, और उसमें मिनिमम मीडियन पूछा हुआ है। इसको कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो मीडियन चेंज हो जाएगा 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आई विल से द मिनिमम मीडियन व्हिच कैन बी हियर इज इक्वल टू क्या? 320। एक बार देखिएगा, इसमें कोई डाउट है? व्हाट इज द मिनिमम? आई होप smallest possible value of Wednesday price if Wednesday is the median price. So I'll say that comes out to be 320. Is it fine everyone? क्या हुआ, डाउट है इसमें? हाँ जी बताइए, किसी को कोई डाउट? एनीवन? शिवांश, audio not clear, lagging. Abhishek Jain, should I repeat it? Can you hear me online? Yes, sir. Should I repeat it? There are 3 prices known to us: 315, 325, 330. Average of 5 days is 322. I don't know. There are 2 more prices of A and B. So this is 8 more. This is 3 more. This is 7 less. आपने कहा बैलेंस करना चाहिए 11 minus 7 it is still 4 more. To balance it, I need to subtract 4 from here. आपको पता, अगर अरेंज करोगे तो मिडिल वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी मीडियन व्हिच इज ऑन वेडनेसडे। तो -4 करना है, तो 322 का एवरेज इज 322। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 644, उसमें से 4 लेस करेंगे 640, एवरेज ऑफ दैट कम्स आउट टू बी 320। तो मैंने क्या कहा, मिनिमम 315, देन 320, देन 320, लिसन टू दिस केयरफुली, 325, 330। इफ यू इंक्रीज इट दिस विल डिक्रीज, बट मुझे कहा था लीस्ट वैल्यू इसकी बताओ, तो मैं 320 ही लूंगा। I believe it is clear now. Is it fine, Abhishek, Aman, Jai Bharia? सर ये 644 वैल्यू कहाँ से है? यार 2 का एवरेज 322 था, तुम्हारे और मेरे पास Okay. एवरेज 322 है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों मिला के डबल के पास कितना होगा? 644। आपने कहा सर अभी तक +4 आ रहा है, इसको बैलेंस करो ना, -4 करो तो 640। हम दोनों के पास 640, एवरेज कितना? 320। एनी डाउट? Okay. Let's come to the next one. Till Thursday on week 1, after each trading day, the cumulative average of the closing prices, that is average of all the prices up to that day, is an integer. What is the highest possible? अब इसमें highest possible और lower least जैसे word के ऊपर ध्यान देना है। Closing price at the end of Wednesday. Wednesday के closing price क्या था? ठीक है,
We are talking about week 1. Week 1, what is the highest price? Kitna ma'am? 332. What is Friday closing? 330. What is the least price? 323. ठीक है? You are saying Friday का प्राइस नहीं चाहिए मुझे. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. The prices are coming in such a way ताकि आप अगर cumulative average निकालोगे, मतलब first and second day का, it comes out to be a integer. It comes out to be क्या? Integer. मैंने कहा एक काम करो, 323 ले लो. अच्छा, और इसमें वेडनेसडे का क्या हाईएस्ट प्राइस पूछा गया? वेडनेसडे का, थर्सडे का? सॉरी, हाँ, हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस ऑन वेडनेसडे क्या था? तो हमने कहा हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस वेडनेसडे को क्या था? आई विल टेक दैट. मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं उसमें हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस क्या लेना चाहिए मुझे? 332. मैं कहूंगा 332 ले लो. ठीक है, तो इट इज 323. ये ऑड नंबर है तो ये भी ऑड नंबर लोगे. कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों ले रहे हो 324, 326 क्यों नहीं लेते? ले सकते हो, कोई बुराई नहीं. दिस नंबर वेडनेसडे को जो आप लोगे, यू वांट दैट टू बी आल्सो क्या? एन इंटीजर. तो हमने कहा 332. अब इसमें नंबर सिस्टम आता है, ध्यान से सुनिएगा. 323 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? सम ऑफ द डिजिट वाला फॉर्मूला मालूम होगा. क्यों? जब इन तीनों का एवरेज निकालूंगा तो आई विल डिवाइड अ नंबर बाय 3. तो अगर ये 2 रिमाइंडर दे रहा है, ये कितना रिमाइंडर देगा? 1. ये कितना रिमाइंडर देगा? 3 से डिवाइड करोगे 2. व्हाट इज 2 प्लस 2? व्हाट इज 2 प्लस 2? प्लस 1. कैन इट बी डिविजिबल बाय दिस? क्या 5 3 से डिविजिबल होता है? आपने कहा सर एक बढ़ाओ. सर एक बढ़ाने में इसमें दिक्कत है, क्योंकि इसको 1 इंक्रीज करोगे तो द नंबर विल कम आउट टू बी क्या? द नंबर विल कम आउट टू बी इवन. हमने कहा चलो इवन का देख लेते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, फिर मैंने देखा कि यार एक काम करो, इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज इट बाय ऑड, 2 से मैंने इसे इंक्रीज करा. आपने कहा सर 1 से इंक्रीज करना चाहिए था. आई वुड इंक्रीज इट बाय 4, 329. तब भी उसका रिमाइंडर जो 2 प्लस 2 प्लस 2 आ जाएगा. तो आई कैन टेक 323 प्लस 329 प्लस 332. ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस नंबर को 4 से बढ़ा दिया. अभी मेरा पहले रिमाइंडर 2 आ रहा था, सॉरी 1 आ रहा था. अगर आपने 4 से बढ़ाया तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 6. ठीक है, तो हियर द इट इज कमिंग आउट, सॉरी इट वाज मोर बाय 1. प्लस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा. तो 1 प्लस 5 विल बी गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. आपने कहा सर ये 323 था, उसके बाद मैंने 325 ले लिया. दिस इज गिविंग यू अ रिमाइंडर ऑफ 2, दिस इज गिविंग यू अ रिमाइंडर ऑफ 1. ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता. तो मैंने कहा एक काम करो, ये 3 से डिवाइड नहीं होता बिकॉज इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1. इन तीनों का सम किया, 5 आया. आपने कहा 6 आना चाहिए था. मैंने इसे 2 से बढ़ाया तो ये 3 हो जाएगा. तो 2, 3 एंड 2 तो अभी भी डिवाइड नहीं होता. 2 से और बढ़ाया तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 5. व्हाट इज 5? 5 कम्स आउट टू बी 2, 2, 2. 2 प्लस 2 प्लस 2 विल कम आउट टू बी क्या? 6. इज 6 डिविजिबल बाय 3? यस. तो आई विल से इंक्रीज इट बाय 4, इट इज 329. अभी ये ऑड नंबर, ये ऑड नंबर, इनका एवरेज विल बी एन इंटीजर. ये ऑड नंबर, ये ऑड नंबर, इवन नंबर प्लस इवन नंबर, बट दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3. आई विल से yes, it is divisible by 3. So what is the highest value that I can take on Wednesday? What is the highest value that I can take on Wednesday? 332. I believe it is clear. So I would say the highest value that we can take on Wednesday will come out to be 332. I believe it is clear to all of you now. Please ask. I wanted it to be a highest value. That's why we moved ahead with it. तो नंबर सिस्टम का फॉर्मूला आपको डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करना था. Is it fine? Clear? During week 1, Raghav executed exactly 2 transactions. He bought 1000 shares and later sold 1000 shares. Week 1 में, given all the daily cumulative averages of week 1 are integer after each day, which of the following cannot be his profit? क्या उसका प्रॉफिट नहीं हो सकता? इसके ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है. उसका प्रॉफिट क्या नहीं हो सकता? आपने कहा सर 1000 खरीदा, 1000 बेचा, तो ऑप्शन देख लीजिएगा 6000, 7000, 9000.
मतलब 6 रुपए का प्रॉफिट, 7 रुपए का प्रॉफिट, 9 रुपए का प्रॉफिट नहीं हो सकता। इसका क्या, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? कैन आई से आई बॉट इट एट 325 एंड आई सेल इट एट 331? आपने कहा नहीं, हाँ सर बेच सकते हो क्योंकि हाईएस्ट इट वेंट अप टू 332। आपने कहा क्यों नहीं बेच सकते? I bought it at minimum price of 322. I sell it at 332. What is the gap between 332 and 320? 23, sorry. This is 23, 23, 24, 25. What is the gap? एक शेयर पे 9 रुपए कमा रहे हो आप मैक्सिमम। तो what is the profit that you are making on 1000? बहुत बढ़िया, 9000। यहां खरीदा आपने, 6000 भी हो सकता। और एक और ऑप्शन था, कौन सा था? 7000। तो 7000 भी हो सकता है। तो आई विल से इट विल रेंज एनीवेयर, द मैक्सिमम डिफरेंस विल बी ऑफ 9000, द मिनिमम विल बी 0। प्रॉफिट के बारे में बात करें हम तो नेगेटिव भी कर सकते थे इसमें। तो आपने कहा -9000 से लेके +9000 तक आई कैन टेक ऑल ऑफ दोज वैल्यूज। और बीच में क्यूमुलेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या फर्क पड़ता है? प्राइस जो मर्जी जाता रहे, मैं मिनिमम खरीदता हूं, मैक्सिमम बेचता हूं, आई विल गेट 9000 का प्रॉफिट। मैं किसी ऐसे प्राइस में खरीदता हूं जिसमें मुझे 6000 का प्रॉफिट मिल सकता है। तो आई विल से none of them will be satisfying there. So what is the answer going to come here? Could it be A and B? Which of the following cannot be his profit? I can say yes. All of the above. So I would say cannot be his profit. His profit can be all of these possible. Is it fine? ठीक है? Is it fine? ठीक है। ये ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है। Let's come to the next question. How many of you tried it? Only 1, 2, 3. Okay. ऑनलाइन किसी ने ट्राई किया था? वेदिका ने ट्राई किया था सिर्फ। वेदिका, अमन हैज ट्राइड इट। एनीवन एल्स? Yes, sir. Sir, I tried it a little. अच्छा ठीक है। लेट मी टेक अप दिस क्वेश्चन बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग इट इज अ टफ क्वेश्चन। आर यू अवेयर अबाउट द प्राइम नंबर 71? ठीक है। There are 4 businessmen A, B, C, D attended a charity gala organized by 4 NGOs: Vidya, Sneha, Sanj, Haryali. Each businessman donated exactly 3 NGOs. सिर्फ 3 को डोनेट करते हैं। All donation were distinct 2-digit prime number. Prime number आप जानते हैं, it ends with 1357. 2 digit है तो यही हो सकता है 13579, and it should not be divisible by any other number other than 1 and itself, with a distinct digit. For each businessman, 2 of his 3 denomination were of the form of MN lakh and NM lakh. मैंने कहा यार ये कैसे हो गया? मतलब अगर सबसे छोटा 13 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? उसका रिवर्स क्या होता है? 31। 17 का रिवर्स क्या होता है? 19 का रिवर्स क्या होता है? लेकिन दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आपने कहा सर इसे हटा दो। 20। अच्छा, इवन नंबर से कोई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इवन नंबर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका रिवर्स करोगे तो इवन नंबर आएगा। तो आपने कहा 20s में कोई नहीं होगा, 30s में हो सकता है। 31 तो हम ले चुके हैं। 37 मैम मान लो 23 है, उसका रिवर्स में लिखोगे 32। इज 32 अ प्राइम नंबर? तो जब यहाँ इवन नंबर आएगा और यूनिट पोजीशन, इसीलिए ना 2 आएगा, ना 4 आएगा, ना 6 आएगा, ना 8 आएगा। तो these are the numbers which are going to come there. I believe it is clear now. तो मेरा आ गया 37। 31 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 31 एंड 13 दोनों आ चुके हैं। उसका रिवर्स इज 73। 39 होता नहीं है। 41 इवन नंबर वाले मत लेना। 51 तो नहीं होता। 53, अच्छा 50s वाले भी नहीं होंगे। जिसका यूनिट डिजिट 5 में आएगा दैट इज डिविजिबल बाय 5। 60s भी नहीं होगा। 70s देख लेते हैं। सर 71 तो हो ही चुका है। 73 का 37, हाँ वो भी हो चुका है। 73 हो गया। उसके बाद 79, हाँ आपने कहा सर 79 का रिवर्स इज 97। 80s में कोई नहीं हो सकता। 90s तो हो ही जाएगा क्योंकि अभी तक सारे आ चुके होंगे। आपने कहा सर 4 नंबर 4 पेयर है तो 4 लोगों के पास तो यही जाएंगे। तो मेरा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सॉल्व हो गया कि देयर आर ओनली 4 प्राइम नंबर्स व्हिच व्हेन रिवर्स दे आर आल्सो प्राइम नंबर्स। ठीक है। द क्वेश्चन व्हिच सीम्स टू बी सो लार्ज becomes very easy. ठीक है। Okay, let's come to the, okay, so they are going to donate like this. तो तरीका यही है, मैं नाम लिख लूंगा A, B, C, D. They are donating to, किस किस को डोनेट कर रहे हैं? विद्या, नेहा, सांझ एंड हरियर।
अच्छा, मैंने हमेशा कहा कि टोटल जरूर लिख लेना, बहुत जरूरत पड़ जाती है कई बार इस टोटल की, तो डोंट फॉरगेट टू राइट टोटल देयर। आएगा नहीं आएगा दैट इज नॉट नेडेड, बट इट्स बेटर। मैं करता हूं तो सॉरी, क्योंकि मेरे चले हो सब लोग, तो मैं भी यही कहूंगा, डू इट। द मिनिमम पॉसिबल डोनेशन वाज मेड बाय अनंत टू स्नेहा वेयर धामा डिड नॉट डोनेट। तो धामा ने स्नेहा में डोनेट नहीं किया है। द मिनिमम पॉसिबल डोनेशन वाज मेड बाय अनंत टू स्नेहा, तो क्या हुआ? 13। Where Dhama did not donate, the maximum possible donation was made by Dhama to Sanj. ठीक है, the maximum possible donation was made by Dharam to Sanj. This is maximum, तो 97 आएगा ये है। ठीक है, where Anand did not donate, Anand नहीं करता भैया donate. Chetan's total donation to Sanj, Chetan's total donation to Sanj and Haryali was 110 lakh. Chetan total donation to Sanj and Haryali, the sum of them is 110. कुछ लोग A and B भी लिख सकते हैं, and I will say A plus B is 100. कौन सा है? Sorry, that is Sanj and Haryali. ठीक है ना, तो I will say A plus B is 110. अच्छा, कोई नंबर A B लिखा हो, उसका रेसिप्रोकल करोगे क्या होगा? तो क्या मैं कह सकता हूँ 10A plus B में अगर आप 10B plus A जोड़ेंगे तो ये 11A plus B हो जाता है। This is a multiple of 110. It is 110. It is a multiple of 11. यार नंबर रेसिप्रोकल होंगे और किसी में रेसिप्रोकल नहीं आता, और कोई भी प्राइम नंबर लोगे तो सम ऑफ देम विल नॉट बी मल्टीपल ऑफ 11. इट इज ओनली इन दिस केस व्हिच इज पॉसिबल। तो मुझे समझ में आ गया ये नंबर ऐसा है, मैंने कहा ये ए बी है और ये इसका उल्टा है। बोलो भाई, ये बी ए हो गया। ठीक है, इज इट फाइन? तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी? वैसे देखो 10 का तो 19, तो 19 एंड 91 हो सकता है। 20s तो आप लेते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स हो रहा है। 30s में क्या हो सकता है? 13 एंड 31, ये तो आएगा नहीं। 17 एंड 71 हो सकता है, ठीक है, बट द सम ऑफ देम इज क्या? 1 plus 7 is not coming out to be 10. इनका सम 10 नहीं आ रहा, तो 37 and 37 हो सकता है। आई विल से दिस इज 37 and 73, दिस इज 73 and 37, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 9 plus 7 16 होता है, इनका डिजिट का सम इज कमिंग आउट टू बी 10, तो वो यही हो सकता है और कुछ नहीं। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस, ऑनलाइन किसी को कोई डाउट हो? His donation to Sneha was 10 lakh more than his donation to Sanj. तो आपने कहा सर ये 47 हो सकता है और 83 हो सकता है, दोनों हो सकता है। हमने कहा हमें नहीं निकालना अभी, तो यहां नहीं करता होगा डोनेशन, खत्म। नन ऑफ हिज डोनेशन वाज हाईएस्ट रिसीव बाय एनी एनजीओ। इसका कोई भी डोनेशन हाईएस्ट नहीं था, किसी ने भी रिसीव करा। आपने कहा सर 97 इज द हाईएस्ट डोनेशन। ध्यान से सुनना, ये सबसे ज्यादा गलतियां लोगों ने इसी में करी हो। मतलब वो जिसको भी डोनेट करेगा एनजीओ का, उसका मतलब जो भी उस एनजीओ को डोनेट करता है उसका कभी हाईएस्ट नहीं होता। ठीक है, आपने कहा क्या बात कर रहे हो, उससे तो 83 इज द सेकंड हाईएस्ट वैल्यू आफ्टर 97। 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज 87 व्हिच इज कमिंग देयर। तो आपने कहा सर ये 83 तो नहीं होगा। अगर ये 83 नहीं होगा तो ये 73 नहीं होगा, ये 37 नहीं होगा। यू गॉट 47, 37 एंड 73। प्लीज हैव अ लुक एट दिस, यू हैव ऑल द राइट टू आस्क मी द क्वेरी। बिल्कुल मैं बता देता हूं सर, चेतन ने ये सब कुछ किया, यहां तक समझ में आ गया होगा। 37 73 आया, दोनों पॉसिबिलिटी थी। स्नेहा को जो डोनेशन दिया वो 10 लाख ज्यादा था, तो 73 का 83, 37 का 47। नन ऑफ हिज डोनेशन, उसके जो डोनेशन थे वाज द हाईएस्ट रिसीव बाय एनी एनजीओ। किसी भी एनजीओ ने जो पैसा रिसीव करा वो हाईएस्ट इसने नहीं दिया, सी ने नहीं दिया। आपने कहा क्या बात कर रहे हो सर, 87 के बाद द सेकंड हाईएस्ट प्राइम नंबर इज कमिंग आउट टू बी 83। स्नेहा को जिसने भी डोनेशन किया उसमें हाईएस्ट सी का आएगा, व्हिच इज नॉट फिजिबल। दैट्स व्हाई 83 कैंसिल आउट एंड इट कम्स आउट टू बी 47। इज इट फाइन? क्लियर एवरीवन? यस, वी गॉट इट, वी गॉट दिस। Bhagat's total donation to Sneha and Sanj was 88 lakh। अभी हमने करा भी था ना, तो हाँ 11 का मल्टीपल है, देख लो। भगत स्नेहा और सांझ को कितना डोनेशन दे रहा है? 88 लाख है, तो क्या होगा इसका? 17 and 71। आई बिलीव इट इज क्लियर। कंफर्म नहीं है तो जबरदस्ती चिपकाना मत।
His donation to Vidya was 10 lakh, less than his donation to Sneha. Sneha से 10 लाख कम है. 10 लाख अगर 17 से 10 लाख कम होगा तो it will come out to be 7 lakh, which is a single digit. लिखा हुआ है 2 digit prime number होना चाहिए. So this must be 71 and this must be क्या? 17. I will say this is 61. I put across here. अरे D बच गया बेचारा. Okay. Anand donation to Haryali was more than twice his donation to Vidya and Sneha. विद्या एंड स्नेहा को जितना दिया हरियाली को का डोनेशन उससे डबल से भी ज्यादा था. आपने कहा सर 13 है तो 31 हो सकता था ये. 31 प्लस दिस इज कमिंग आउट टू बी क्या? 44 का डबल इज 88. 88 से बड़ा क्या? 89. आपने कहा क्या बात कर रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है. आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ इट, प्लीज पे अटेंशन. आपने कहा सर ये 31 हो गया. अरे मैंने कहा ये 13 लिया, 70 ले नहीं सकता. मिनिमम 19 बचा. 19 भी इसमें ऐड करता तो 19 प्लस 13 कितना होता है? 32. 32 का डबल कितना होता है? ठीक है, 64 में जाएगा. ठीक है, 64 से बड़ा नंबर जो होना चाहिए वो नंबर आना चाहिए. तो कैन आई से इट कैन बी क्या? 67. क्या मेरी बात समझ में आई? यस. लेकिन आपने कहा सर 13 का उल्टा तो 31 होना चाहिए था. ये 31 है क्या? अगर ये 19 लोगे तो 31 होना चाहिए था ना. याद है यहाँ पर 13 and 31 will come in a pair. इनका sum itself is coming out to be 32. How can it be more than that? So अगर ये 13 होगा, there should be, see, understand, mn reverse nm should be there. So if 13 is written anywhere, 31 should come. Either 31 comes here or 31 comes here. If 31 comes here, minimum value of this is 19 plus 13 is coming out to be 32. 31 cannot be more than double of 32. हमने कहा ruled out हो गया. Is it fine? Clear now? So what do I get? I got it cannot be equal to क्या? 19. This is 13. This is 31 and it has to be क्या? 89. बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन. धर्म donation to हरियाली was less than 1/5 of his donation to सांझ. सांझ का 1/5 कितना हो गया? 19.4 से ज्यादा या कम? कम होना चाहिए. 19. Only 19 is a number that is left because 13 and 17 are gone. You got this. अच्छा, एक और बचा है. रिवर्स नहीं लिखा तो this will be 17. This reverse will come. I believe it is. 91 नहीं. 91 is not a prime number. 13 sevens are 90. I believe it is clear. Sir, I have a question. हाँ जी बोलो. सर ये 61 कैसे आया विद्या का बी के? Vidya is 10 lakh less than सांझ. So if you take सांझ, sorry, स्नेहा, ये लिखा हुआ है. Bhagat, total donation of Sneha and Sanj was 88 lakh. His donation to Vidya was 10 lakh less than Sneha. Sir, ये 17 होता तो 7 आ जाता है. Single digit नहीं लिखा. तो 71 होगा तभी ये 61 आएगा. Is it fine? I think all of questions can be answered. ठीक है. चेक कर लीजिएगा सारे के सारे, क्योंकि कुछ भी इसमें वैसा नहीं है. ठीक है. Should we start with this? या इसको छोड़ देते हैं. एक और हमारा पहले का बचा हुआ है. We'll cover it in the next class. जब भी आएगा, one day I'll take all these. ठीक है. But it was also a doable question. But जितने भी क्वेश्चन थे उनमें से ये एक दो क्वेश्चन इसके ऐसे थे which was tougher than others. But otherwise this question can be done easily. अच्छा, there is one more set left. ठीक है. So this is easy, similar pattern of the questions we have already discussed in the classroom. So ये दो सेट और एक सेट पहले का बचा हुआ है. I think we can discuss 3 sets in the next class. Fine. Okay, thank you. Bye. Bye everyone here. Abhishek, Aman, Richa, Shivansh, Ujjwal. Thank you everyone.